सो आज का जो क्वेश्चन है गेट 2023 2 मार्क का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। Consider the linear system mx equals to b where m equals to given the 2 × 2 matrix and b equals to given. Suppose m equals to lu where l and u are lower triangular and upper triangular square matrices respectively. Consider the following statements. So statement P है, if each element of the main diagonal of L is 1, then trace of U equals to 3. And Q statement है, for any choice of the initial vector x0, the Jacobi iterates xk for k equals to 1, 2, 3 and so on converges to the unique solution of the linear system mx equals to b. Then option है both p and q are true, p is false, q is true, p is true, q is false. Both p and q are false. So इस क्वेश्चन को करने इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत है। पहला, द व्हेन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनली डोमिनेंट। दूसरा, थ्योरम वो हम लिखेंगे। और तीसरा वो भी एक थ्योरम, उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो हमारा जो पहला रिक्वायरमेंट है वो है डायगोनली डोमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स व्हेन ए मैट्रिक्स इज डायगोनली डोमिनेंट। एंड दूसरा चीज़ है थ्योरम, उसको हम लिखेंगे उसके बाद। एंड और दो थ्योरम और एक डेफिनेशन, इन 3 चीज़ का ज़रूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो पहले लिखेंगे व्हेन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनली डोमिनेंट। सो हम 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए दिखा देता हूँ। आप किसी भी n × n स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप ये कर सकते हो, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स इज कॉल्ड इफ डायगोनल डोमिनेंट इफ modulus of a11 strictly greater than mod of a12 and mod of a22 strictly greater than mod of a21. If this condition hold, so the matrix A is called strictly diagonally dominant. Then A is called strictly diagonally dominant. सो दूसरा जो है हमारा एक थ्योरम, उसको लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो पहला थ्योरम है थ्योरम था if A is strictly diagonally dominant, diagonally dominant matrix, then the Jacobi iteration and Gauss-Seidel SEIDEL Gauss-Seidel iteration converges for
for any initial choice starting vector. So जो initial vector जो given, जो initial vector होगा कोई भी initial choice vector के लिए ये satisfy कर जाएगा, converges होगा if A is strictly diagonally dominant. एंड दूसरा थ्योरम है, थ्योरम है a necessary and sufficient condition for convergence of a iterative scheme of the form xk plus 1 equals to h xk plus k b is that the eigenvalues of the iterative matrix of the iterative matrix satisfy mode of lambda I of the iterative matrix H. So lambda I of H का mod strictly less than 1. मतलब H जो iterative matrix है उसका जितने सारे आइगन वैल्यू होगा सभी का mod लेस देन 1 होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा, ठीक है. सो जो हमारा दूसरा थ्योरम 1 था वो सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब कोई मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट है तो वो कन्वर्ज कर जाएगा कोई इनिशियल वेक्टर के लिए. अगर नहीं है तो वो कन्वर्ज कर सकता है, नहीं भी कर सकता है. सो अगर डायगोनली डोमिनेंट नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कन्वर्ज नहीं करेगा, वो कन्वर्ज कर सकता है. सो पहले हम क्यू स्टेटमेंट को देखेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट पी को देखेंगे पहले. सो क्यू के लिए पहला बोला जो यूनिक सॉल्यूशन होगा सिस्टम के पास. सो पहले चेक कर लेते हैं एम का डिटरमिनेंट क्या होगा. 2 - 1 - 4 3 का डिटरमिनेंट होगा 6 - 4 दैट इज 2 नॉन जीरो. सो द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड you can find the solution x equals to m inverse b. So the system has unique solution. Now we check the convergence in Jacobi iterate method. Now we check convergence. So first we check
थ्योरम 1 इसको अप्लाई करेंगे तो पहले चेक करेंगे मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट है कि नहीं है। उसके लिए हम देखेंगे A11 दैट इज मॉड्यूलस अप टू strictly greater than magnitude of -1 but mod of 3 less than mod of -4, so the matrix is not diagonally dominant। सो मैट्रिक्स कन्वर्ज कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। इसके लिए हम थ्योरम 2 अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें ज़रूरत है इटरेटिव मैट्रिक्स H का। तो पहले हम जैकोबी इटरेशन स्कीम बनाएंगे, उसके बाद H फाइंड करेंगे, देन उसका आइगन वैल्यू निकालेंगे। सो थ्योरम 2 not satisfies here, so the scheme may converge or may diverge here. Now we find the Jacobi iterative scheme. For the given system. So हमारा जो सिस्टम, so पहले हम Q स्टेटमेंट को देखेंगे। So we find the iterative matrix H. So हमारा जो सिस्टम था, सिस्टम क्या था? सिस्टम था जो हमारा सिस्टम था 2x1 प्लस माइनस के x2 इक्वल्स टू -2 माइनस के 4x1 प्लस के x2 3x2 सॉरी इक्वल्स टू 5। सो पहले हम इटरेटिव स्कीम बनाएंगे। सो इसके लिए x1 जैकोबी इटरेशन स्कीम। सो x1 इक्वल्स टू 1/2 माइनस के 2 प्लस के x2 and x2 equals to, from the second equation, 1/3 5 plus के 4x1। So for the initial choices vector x1 0 x2 0, we can find in this formula. We can find x1 1 and x2 1 by this formula. So we can find this. So this is our scheme. Now इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं। So this equals to 0 times 0 into x1 plus 1/2 x2 minus के 1, this equals to 4/3 x1 plus के 0 into x2 plus के 5/3। सो ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं x कैपिटल X की पावर k plus 1 इक्वल्स टू h x की पावर k plus k b, where h is the iterative matrix, here h is, so for k equals to 0 1 2 and so on. So here h equals to 0 1/2 4/3 and 0. Now we find the eigenvalues of this matrix, and b equals to -1 is column vector -1 5/3. So now we find the eigenvalues of the matrix H. Now we
पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस के ट्रेस ऑफ एच प्लस के into lambda plus के date of h, this equals to 0. So this implies lambda square माइनस प्लस के डिटर्मिनेंट होगा माइनस के 2/3 this equals to 0. So this implies lambda square equals to 2/3. So this implies lambda equals to प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/3. सो हमारा दो आइगन वैल्यू, पहला लैम्डा 1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 एंड दूसरा लैम्डा 2 इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 2/3. सो मॉड्यूलस ऑफ दिस टू आइगन वैल्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2/3, that is less than 1. So by second theorem, the matrix, so the scheme as the all eigenvalues of the iterative matrix come out strictly less than 1, so the system is converges. So हमारा जो Q स्टेटमेंट था converges to यूनिक सॉल्यूशन. सो हमारा जो Q स्टेटमेंट था आ गया Q, हाँ तो Q ट्रू हो गया. सो Q ट्रू दैट इज ऑप्शन सी बोल रहा है Q फॉल्स, ये भी गलत. ऑप्शन डी बोल रहा है Q फॉल्स, ये भी गलत. now try to find whether option P is correct or not. so ये Q स्टेटमेंट था. सो P स्टेटमेंट के लिए हमारा गिवन था जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था उसका जो डायगोनल था वो 1 1. सो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं. और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सो U11 U12 0 0 U21. सो गिवन था m equals to LU. so this imply L को लिख लेता हूँ ऐसे and U equals to 1 U11 U12 0 U22. so this equals to जो M मैट्रिक्स था M था 2 माइनस के 1 माइनस के 4 and 3. so this imply पहला मैट्रिक्स का पहला रो उसके साथ दूसरा मैट्रिक्स का पहला कॉलम दैट इज U11 इक्वल्स टू 2 एंड पहला रो दूसरा कॉलम दैट इज U12 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई होगा पहला रो के साथ दूसरा कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम दैट इज U12 इक्वल्स टू -1 एंड इसका पहला मैट्रिक्स का दूसरा रो के साथ अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा L21 इंटू U11. सो U11 का वैल्यू 2 उसको बैठा दिया इक्वल्स टू माइनस के 4 इम्प्लाई L21 इक्वल्स टू माइनस के 2. नाउ L21 टाइम्स U12. सो L21 का वैल्यू माइनस के 2 L21 इंटू के U12 प्लस U22 इक्वल्स टू 3. सो दिस इम्प्लाई U22 इक्वल्स टू 3 माइनस के 2 और माइनस के 1 दैट इज -2 टाइम्स माइनस के 1 दैट इज 3 माइनस के 2.
दैट इज 1। सो हमारा जो वैल्यू u11 इक्वल्स टू 2, u1 इसका ज़रूरत नहीं है तो लिख देता हूँ u1 2 इक्वल्स टू -1 एंड u2 इक्वल्स टू 1. So trace of the upper triangular matrix u equals to 2 plus k 1, 2 plus k 1. So 2 plus k 1 that is 3. So हमारा जो पहला स्टेटमेंट p था वो भी पहला स्टेटमेंट था p, वो भी ट्रू हो गया, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है. So option B is false and option A is the correct one. So that's okay.